Hello guys, welcome. Hello guys, welcome to Vasudev Coaching Center. Now today we are going to start. The chapter name is photosynthesis in higher plant. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, चलो देखते हैं आगे। वैसे तो लोग जूनियर क्लास पढ़ाई था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द फूड मेकिंग प्रोसेस अकर्ड इन द प्लांट एंड वेयर रिक्वायरमेंट ऑफ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एयर एंड द क्लोरोफिल एंड विद ऑल्सो मोस्टली सनलाइट। दिस ऑल प्रोसेस कंटामिनेट टुगेदर नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब सूर्य का रोशनी लेके प्लांट जो खाना बनाता है ना, उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बट सूर्य की रोशनी को ट्रैप करने के लिए जो एलिमेंट चाहिए होता है, जो प्रॉपर्टी चाहिए होता है, वो नॉर्मली क्लोरोफिल में पाया जाता है। और वही क्लोरोफिल के कारण प्लांट का पत्ता जो होता है वो हरा होता है। चलो अब आगे देखते हैं, मेन टॉपिक पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ एंजाइम रेगुलेट एनाबॉलिक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ organic compound inside the chlorophyll and containing cell from the carbon dioxide and water with the help of sunlight as a source of energy। हिस्टोरिकल परसेप्टिव क्या होता है इसको देखो। जोसेफ नाम के साइंटिस्ट थे 1770 में। सोड द प्लांट हैव एबिलिटी टू टेक अप CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड रिलीज O2। इसका भी फ़ोटो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ज़िंदगी में काम आएगा। और क्या ही चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं आगे हम लोग इस पर। ओके, इन्होंने बोला था शोड द प्लांट, मतलब प्लांट का एबिलिटी होता है CO2 लेने का और O2 रिलीज करने का। ओके, बट उसके बाद आए थे जॉन इंजन हॉज 1779 में, जिन्होंने कहा था प्लांट जो था O2 रिलीज करता है by the plant was possible in the sunlight and only the green plant of plant, मतलब ग्रीन प्लांट ही जो होता है वो सनलाइट को लेके O2 प्रोड्यूस करता है। उसके बाद थियोडर दे सर्चर आए थे 1804 में। वाटर इज एसेंशियल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू अकर। उसके बाद आए थे जूलियस वॉन सेकस 1854 में। उन्होंने कहा था द ग्रीन प्लांट इन द plant produces the glucose and which store the starch। and the TW इंगलमैन आए थे, उन्होंने 1888 में द इफेक्ट ऑफ different wavelength of light and on the photosynthesis on and plotted the first action spectrum of photosynthesis। The CB Van Neil 1931 and photosynthesis is essential of a light dependent reaction in which hydrogen from oxi- oxidizable and compound reduce the CO2 to form a sugar, and he gave a simplified chemical equation of photosynthesis। Hill 1937 में आए थे, उन्होंने कहा था इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इवन द लाइट रिएक्शन। ओके, एंड उसके बाद तक कार्बिन आए थे 1934 में और 55 तक। उन्होंने कहा था ट्रेस द पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। एंड फिर आए थे हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट में, उन्होंने डिस्कवर द C4 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन। फिर आए थे साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द green part of the plant and mostly in the leaves within the green with the leaf of photosynthesis occur only in a mesophyll cell and which contain a chloroplast, and the chloroplast are the actually site of the photosynthetic thylakoid in the chloroplast contain the pigment and the where requirement of the solar energy and integrate and the photosynthesis, and the membrane system grana is responsible for the trapping light energy, and the system synthesize the ATP and NADH biosynthesized phase dark reaction carried in stomata। पिगमेंट इन्वॉल्व्स इन द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए क्या होता है? वो ब्राइट ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटिड एंड द मेजर पिगमेंट एक्ट एज द सेंटर एंड इन्वॉल्व द ट्रैपिंग एंड द कन्वर्टिंग लाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। एंड द क्लोरोफिल बी क्या होता है? ये येलो कलर का होता है। एंड द जेंथोफाइलिस क्या होता है? ये भी येलो कलर का होता है। एंड द कैरोटीन बी का येलो टू ग्रीन फिर ऑरेंज में होता है। इट इन द ब्लू एंड द रेड स्पेक्ट्रम शो द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ये सारे पिगमेंट का नाम भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इसको भी शेयर कर दिया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा। अब
नाउ आगे देख लेते हैं हम। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? उसके बाद हम जानते हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है या फोटो रिएक्शन क्या होता है? देखो होता क्या है, समझे ध्यान से। हाँ, the light reaction the photochemical phases include the absorption, splitting of water, evolution of oxygen, and the formation of high energy and the compound like ATP, NADH, NADPH, and light harvesting complexes LSH, LHC, and the light harvesting complexes are made up of 100 pigment molecules bound to the protein and within the photosystem and psi and the photosystem second and the psi double, and each photosystem has all the pigment except one molecules of chlorophyll, forming a light harvesting system N10. And the reaction center chlorophyll A is different in both photosystem. Okay, the photosystems first psi and chlorophyll second. Uh, A has an absorption of peak at 700 mm to 700 mm यानी कि P 700 photosystem second यानी कि PS डबल आई यानी कि chlorophyll has absorbed a peak at 680 mm यानी कि PB 680. Process of photosynthesis देखो, it includes two phases, photochemical phase and biosynthetic phase. Photochemical phase and the light reaction in phase include the light absorption and splitting the water and the oxygen release and the formation of ATP and NADPH. Biosynthesis dark phases and इसका कहते हैं क्या है, देखो इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट फेज एंड सिंथेसाइज ऑफ द फूड मटेरियल शुगर। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो रुको एक मिनट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो फर्स्ट देखिए तो फोटो सिस्टम सेंटर इलेक्ट्रोफाइल absorbed 680 nanometer wavelength and red light causing electrons to become excited and release two electrons and from the atomic nucleus. These nucleus are accepted by the primary electron acceptor, that is ferredoxin, and the electron from the ferredoxin and the passed to the electron transport system and the consisting cytochromes. Okay, उसके बाद है the electrons moves in downhills in the term of redox potential by the oxidation reduction reaction, and finally the electrons reached the photosynthesis photosystem first, and the simultaneously electrons released from the photosystem first is accepted by the electron acceptor. The electron hole created in PS first is filled up by the electron PS second, and from the PS second and electron from PS first pass downhill the reduce and NADP into the NADPH plus plus and H plus. Okay, and the photolysis of water क्या होता है, PS second lose electron continuously and filled up by the electrons and released due to the photolysis of water, and the water is split into H plus O and the electrons in the presence of light and Mn2 plus and Cl minus. This is also create O2 plus, and the byproduct of the photosynthesis and the photolysis takes place in the vicinity of the PS second, and 2H2O and to 4H plus and the HO2 plus and the 4 electron minus. उसके बाद हमारा है फोटोफॉस्फो Rylation. Okay, photophosphorylation and the process of formation of high energy chemical ATP, NADPH, and the non-cyclic photophosphorylation. Two photosystem works in series, and the first PS second and then PSI, and then these two photosystems are connected through the electrons chain Jan scheme, and ATP, NADH double NADH plus and the H plus are synthesized by this process, and the PS first and the PS second are found in the lamella of granite, and hence this process is carried away.
carried here, sorry. Cyclic photophosphorylation क्या होता है? Only a PS first works and the electrons circulate within the photosystem, and it happens in the stroma and the stem lamella and the possible location, because in this reaction PS second NADPA reductase and enzymes are present absent, and hence only ATP molecules are synthesized. Chemiostic hypothesis क्या होता है? Chemiostic hypothesis explain the mechanism of ATP synthesis of chloroplast. In the photosynthesis, ATP synthesis is linked to the development of a proton gradient across a membrane, and protons that are produced by the splitting of the water are the accumulation inside of the membrane and the thylakoid in lumens. As the electron moves through the photosystem, protons are transported across the membrane. NADP and reductase enzymes is located on the stroma side of the membrane, and along with electrons from the acceptor, it removes H plus and from the stroma during the reduction NADPH plus, and 6 number जो है, it creates proton gradients across the thylakoid membranes as well as a measurable decreases and in pH in the lumens. ATPs ATPase as has a channel that allows the diffusion of proton bags to the stroma, straws, and the membrane. This process energy to activate ATPase, and the enzymes are the catalyze and the formation of ATP. Biosynthetic phase in C3 plant. ATP and NADH, the product of light reaction, are used in synthesize food, and the first CO2 fixation product in the C3 and the plant is phosphoglyceric acid and the or PGA. In some other plants, the first stable product is an organic and the acid organic acid called the oxalic acid, and a fourth carbon compound hence is called C4 plant. And the Calvin cycle, CO2 receptor molecules is RUBP, and the ribose biophosphate, and the cyclic path of sugar formation is called Calvin cycle of the name of Melvin Calvin, and discovery of pathway, and the Calvin cycle proceed and in 3 stages: carbocyclation and reduction and regeneration. Carbocyclation is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate, and the CO2 combines with the ribose 1,5 bisphosphates and to form 3 PGA in the presence of Rubisco enzymes. Reduction क्या होता है? These are a series of reactions that lead to the formation of glucose. B number है 2 molecules ATP of phosphorylation and 2 NADPH for reduction, and the CO2 molecules fixed, and C number है fixation of 6 molecules of CO2, and 6 turns of the cycle are required for the formation of 1 molecule to glucose. Regeneration of the CO2 acceptor molecules RUBP, and is the crucial is if the life cycle is to continue interrupted, and regeneration step required 1 ATP for the phosphorylation to form RUBP. Hence for every CO2 molecules entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required. C4 pathway. The C4 pathway. Plants that are adapted dry tropical region that have C4 pathway, and the C4 oxalic बोलता नहीं है oxaloacetic acid is the first CO2 fixation product. These plants have special type of leaf anatomy, and they tolerate and higher temperature, and the leaf has the type of cell mesophyll cell, and the bundle sheath cell carriage autonomy. Initially CO2 is taken up by the phosphophenol and the pyruvate. PEP is mesophyll cell and exchange is it to oxaloacetic acid, and OAA is the presence of PEP carboxylic, and the oxaloacetate is reduced to malate and the aspirate that reaches into the bundle sheath cell. In the bundle sheath cell, C4 acid are broken down into the release CO2,
and A3 carbon molecules, that is pyruvate acid. The CO2 released in the bundle sheath shall enter and the C3 cycle because these cells are enriched enzymes ribose biphosphate and carboxylic oxygenase and the ribosco. Now, the pyruvate formed in the bundle sheath shell transported back to the mesophyll cell get phosphorylated and to form the phosphophenol pyruvates. Photorespiration क्या होता है? The light reduced respiration evolution of CO2 in the green plants is called photorespiration. And active site of Robisco has site of the for the both O2 and CO2. In C3 plant some O2 binds and the Robisco and hence fixation is decreased. In this process RUBP and instead of being converted into two molecules of PGA bind the O2 and to form one molecules of PGA phosphoglycogen and in photorespiratory pathway there is a neither synthesis of sugar or nor ATP rather than it is in the release of CO2 and with the utilization of ATP. In the photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP and NADPH and therefore photorespiration is a waste process. In C4 plant respiration does not occur and aerobisco enzymes present in the bundle sheath cell B's primary carboxylation it is takes place in the mesophyll and cell and the PEP carboxylase and CO2 supplies to the bundle sheath cell by the C4 acid and intermediates. Hence, C4 plant are photosynthetically more efficient than C3 plant. उसके बाद हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? इफ़ अ केमिकल इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर एंड इट्स रेट विल बी डिटर्मिनेड बाय द फैक्टर विच नियरेस्ट टू द मिनिमम वैल्यू एंड इट इज द वैल्यू इज डायरेक्टली अफेक्टेड द प्रोसेस इफ द क्वांटिटी इज चेंज. इसी को हम लोग ओके गाइस दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट इट. You are a part of journey of needs, so don't forget to subscribe. Okay, and as you can जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो.